Okay, beta. So, yes, that was the last thing that we did. Now, something about the heterogeneous equilibrium. Okay? Heterogeneous equilibrium. देखिए, heterogeneous means technically in chemistry we use two terms. Homogeneous means same physical state, or same heterogeneous means different physical state. Rate of reaction may remember we have a heterogeneous catalysis and homogeneous catalysis, the same thing. So heterogeneous equilibrium means the equation, reversible equations in which reversible equation in which different physical states are present. Okay, the equation in which different physical states are present. Let's suppose इसको मैं तीन कैटेगरी में डिवाइड करता हूं. The equation that consists of solid and liquid. ठीक है, ऐसी इक्वेशंस जिसमें सॉलिड और लिक्विड हो. Let's suppose you have a reactant A in a liquid form, you adding B in a solid form. There's a reversible reaction taking place, making 2 moles of C in a liquid form plus 1 mole of D in a liquid form. Clear? So if you have to write down the Kc is equals to the concentration of product, which is C in a liquid form, square concentration of D divided by, which is product over reactant, the concentration of A in a liquid. That's the Kc expression. क्या किया मैंने? Yes, do not include solid. ठीक है बेटा, because solid do not have any concentration, so we do not include solid in our Kc expression. बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा. आसान. B, in a similar way, if you have a solid and a gas, any equation in which you have a solid and a gas. Let's suppose you have A in a gas form plus B in a solid form, forming C in a gas form plus D in a gas form. Okay? So I confine myself towards just solid and a gas. Again, the same concept. Do not include solid. इसमें भी solid include नहीं होगा. Clear? So if I have to write down the Kc expression, it must be concentration of C in a gas form. Remember, for gases, we can write Kc and a Kp both. Multiply by D in a gas form divided by A in a gas form. Okay? Again, do not include solid. Do not include solid. Clear? Now, for gases, yes, you can write Kc, you can write Kp as well. So if I have to write Kp for this one, so zara kaise likhenge? The partial pressure of C gas into partial pressure of D gas divided by the partial pressure of A in a gas form. ठीक है बेटा, देखो मैंने यहां से स्टार्ट किया है. नॉर्मल इक्विलिब्रियम की एक्सप्रेशन लिख रहे हैं फॉर हेट्रोजीनियस इक्वेशंस. ठीक है, हेट्रोजीनियस इक्वेशंस मीन द इक्वेशंस इन व्हिच वी हैव डिफरेंट फिजिकल स्टेट प्रेजेंट. बिफोर दैट हमने जितनी इक्वेशंस करी हैं उनमें सेम फिजिकल स्टेट थी, आइदर ऑल आर गैसेस, ऑल आर लिक्विड. सो उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया. पहली कैटेगरी में आई सेड कि इफ यू हैव अ इक्वेशन इन व्हिच यू हैव अ सॉलिड एंड अ लिक्विड,
केसी लिखना है, सॉलिड को इंक्लूड नहीं करेंगे। गैस और सॉलिड होगा तो भी हम सॉलिड को इंक्लूड नहीं करेंगे। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। सॉलिड आर नॉट इंक्लूडेड आइदर इन केसी और इन केपी। ठीक है, क्लियर? अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट is the last one. See, the equation in which you have a liquid and gas involved. अब सॉलिड नहीं है बल्कि अब लिक्विड और गैस। सॉलिड के लिए तो वी हैव अ फाइनल वर्डिक्ट, सॉलिड इज नॉट इंक्लूडेड आइदर इन केसी और इन केपी। तो एक सॉलिड सा वर्डिक्ट आ गया केसी सॉलिड का। नाउ लेट्स सपोज वी हैव अ इक्वेशन A 2A in a liquid form plus B in a gas form forming 2C in a gas form plus D in a liquid form। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। यूज ओनली लिक्विड्स फॉर केसी। ठीक है, अब केसी के लिए आप क्या करोगे? सिर्फ लिक्विड्स को इस्तेमाल करेंगे। वी डू नॉट इस्तेमाल करेंगे किसको? गैसेस को। इन अ सिमिलर वे यूज ओनली गैसेस फॉर के। ठीक है, केसी में गैस को इग्नोर करेंगे और केपी में लिक्विड को इग्नोर करेंगे। करके देख लेते हैं। ठीक है, so can I write down the Kc for this one? Can you please try the Kc for this one? Product over reactant. So the concentration of B in a liquid form divided by the concentration of A in a liquid form ka square. Good, excellent. And for Kp, the partial pressure of C ka square divided by the partial pressure of B, and that's it. Okay, you can write down the state symbol as well. Clear? This is an important statement and you should know that K normally हम Kc Kp दोनों लिख सकते हैं for gases, but for heterogeneous equilibrium Kc is only for liquid and Kp is only for gases. ठीक है? Can you please write down Kp expression for this reaction? Calcium carbonate solid forming calcium oxide solid plus carbon dioxide gas. Can you write down Kp for this one? They once asked this in exam, but in A2. This is a case of a solid and gas, है ना? Solid और gas का केस है, तो solid तो हमें include नहीं करना। These are two are the solid. ठीक है, so Kp की expression क्या हो जाएगी? Kp is equals to partial pressure of carbon dioxide gas only. This is a very simple expression of Kp. ठीक है, थोड़ी सी अनयूजुअल लग रही है बिकॉज Kp इज ऑलवेज प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, ऐसे ही है ना? लेकिन यहां पर वी हैव रिएक्टेंट इन अ सॉलिड फॉर्म एंड वी डू नॉट इंक्लूड सॉलिड इन अ Kp एक्सप्रेशन। देन मुश्किल। So this is about the heterogeneous equilibria. आसान सी बात है, you should know how to handle these type of equilibrium expression. You should know how to calculate, how to write down the Kc or a Kp expression. And this is only for the equations in which you have a different physical state present, either solid with liquid, either liquid, sorry, solid with gas. So we do not include solid in any case. लिक्विड एंड गैस में अगर केसी पूछा है सिर्फ लिक्विड्स को लेंगे, अगर केपी पूछा है तो सिर्फ गैसेस को लेंगे। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए मैंने आपकी डीकंपोजिशन इक्वेशन दी एंड आई आस्क यू टू राइट डाउन द केपी एक्सप्रेशन। सो आपने इसकी केपी की एक्सप्रेशन लिखी व्हिच इज केपी इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ओनली। ठीक है, नथिंग एल्स। नाउ लेट्स स्टार्ट with the calculations of Kc and Kp.
A major part of this chapter is about the calculation. ठीक है? Calculation of Kc and Kp. Take out your calculators. Okay, beta. Now, you can see this is the question in which you have a reversible equation 2NoCl forming 2No plus Cl2. सही है? और आपको टू डिफरेंट टेम्परेचर पे यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Kc. पहले तो उसने कहा राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ Kc पार्ट सी में, and then in part 2 it says calculate the value of Kc at two different temperature. The concentration at equilibrium at two different temperature is already given. So मैं flip कर रहा हूँ वापस पेज and I'm going to ask you, can you please write down the expression of Kc for this equation? इस equation के लिए Kc की expression लिखिए अपने पास. अच्छा, a very common error बेटा, बच्चे ना they simply use the plus sign between these two brackets. No, multiply. ठीक है? Divided by NOCl. You can write down the state symbol. आप लिख सकते हैं, मैंने नहीं लिखे, तो वैसे इतना जरूरी नहीं है, लेकिन but you can write it down. Okay, done है? चलें, plug in the value and find out the Kc value at 230 degrees Celsius. And these are the concentrations are given. So Kc product NO, which is 1.46 into 10 power minus 3 ka square, multiply by Cl2 is 1.15 into 10 power minus 2 divided by NOCl, which is 2.33 into 10 power minus 3 ka square. NOCl, just have a look at it. Minus 3 beta. Chlorine is minus 2, minus 3, minus 3. ठीक है जनाब. 4.5 minus 3. And what should be the unit of this Kc? What should be the unit? Yes. So we do the unit cancellation. यहाँ मोल पर dm क्यूब का स्क्वायर है. This is mole per dm cube divided by mole per dm cube का स्क्वायर. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा and the remaining is mole per dm cube. देखो आंसर सेम आ रहा है बेटा, 4.5 in 10 power minus 3. If you need the value, just have a look at these values. कहाँ गई? Yeah, these are the values. ठीक है? Now do the same for 465 degrees Celsius. Now the values changes. Values लगाइए and calculate NO square, which is 7.63 into 10 power minus 3 square divided by 2.14 into 10 power minus 4 divided by 3.68 into 10 power minus 4 का square. Exponential power check करो, आनी चाहिए.
3 2s are 6. एक्सपोनेंशियल पावर नहीं आ रही. एक दफा चेक कर लो बेटा. Chlorine is without a square, NO is with a square, and this one is नहीं किया ना स्क्वायर. 0.09 यानी 9.2 into 10 power minus 2. Am I right? Mole per dm. Now on increasing temperature, देखिए next part क्या कह रहा है. Is the forward reaction endothermic or exothermic? Explain your answer. The Kc value increases with temperature or decreases? बढ़ी है, कम हुई है. Temperature low था, Kc value is smaller. The temperature increases, almost double किया the Kc value. As the Kc value increases with temperature, it means the forward reaction is endothermic. ठीक है, तो आप लिखेंगे as Kc value increases with temperature, so forward reaction is endothermic. ठीक है बेटा, अगर ये कम हो जाती तो हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. क्लियर. अगेन दिस इज अ कैलकुलेशन बेस्ड, तो मैं भी कैलकुलेशन पर ही हूं यहाँ पर. This is the first format of a question in which you are provided with the equilibrium composition and they're asking you about the value of Kc or Kp. And this is the reaction about the question about the Haber's process. In the Haber process, ammonia is synthesized from its element nitrogen and a hydrogen. Write an equation which is normally used in Haber's process, either is endothermic or exothermic. Although it was a question when Haber process was a part of our syllabus last year तक था हमारे पास, अब नहीं है, लेकिन हम लिख लेते हैं. This is basically N2 plus 3 H2 reversible equation forming 2NH3 and the reaction is exothermic. वैसे तो हमें O level से ही ये याद है ना. ठीक है, अब इसी में इक्विलिब्रियम से को छोड़ के हम कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं. So can you write down the Kp expression? The equation is N2 gas plus 3H2 gas forming 2NH3 gas. Can you write down the expression of Kp for this one? So it is the partial pressure of NH3 gas ka square divided by the partial pressure of N2 into the partial pressure of H2. क्या चीज मिसिंग है? Yes, the cube is missing. Now, the partial pressure of these three gases at different temperature is given. Plug in the value, beta. Get the Kp value for me. 37.2 ka square divided by nitrogen 44.8 multiply by hydrogen, which is 105.6 ka cube. 2.66 into 10 power minus 5. Just 2.6. Okay. Exponential minus 5. Okay. Can you give me the unit of Kp as well?
The denominator have a power of 4 and the numerator have a power of 2. यानी 1 upon square बचेगा and this is ATM. So can I say -2? है ना? ATM power -2. You can do the unit cancellation. अगर verbally नहीं हो रहा तो आप unit cancellation कर सकते हैं और ATM power -2 is basically. अच्छा देखिए this is the first format of calculation. First format में क्या किया इन्होंने? They gave you the equilibrium composition, है ना? They gave you the concentration at equilibrium. They give you the partial pressure at equilibrium, and they ask you about the Kc और Kp value. ठीक है? तो अभी थोड़ी सी और practice इसी की करते हैं, and then we will move towards the second format. Okay. Question number 19. Is that visible now? Yes. Hydrogen iodide dissociate into its element according to the following equation. Write down the Kc expression for this. So Kc is equals to concentration of hydrogen gas into concentration of iodine gas divided by the concentration of hydrogen iodide gas का square. ठीक है? And Kc has no unit. Although they did ask for it, but हम लिख देंगे Kc has no unit because the number of moles on the product side and the reactant side is equal. Can you find out the Kc at 120 degrees Celsius? अच्छा एक confusion रहेगा यहाँ पर याद रखिएगा. Whenever they ask you about the Kc, they always give you the temperature because Kc is affected by temperature. That's why they always ask find out the Kc at 60 degree, find out the Kc at. There's no need to use this temperature. Okay. So हम इस temperature को use नहीं करेंगे, but we calculate the Kc at any particular temperature. So जनाब hydrogen 120 degree the mixture containing इतने mole per dm cube of hydrogen iodide. So 1.47 का हो जाएगा square. इतने moles of each. ठीक है जनाब 0.274 into 0.274, which is equals to 0.035. This is basically the value of Kc. Can you comment on this Kc value? Okay, the equilibrium is more towards the left hand side or the equilibrium is more towards the right hand side? बताओ. इस Kc की value को देखिए. Have a look at the Kc value and comment on the Kc value. The equilibrium is more towards the left hand side or the right hand side? देखिए, if the Kc value is small, even smaller than 1, okay, it means that you have more reactant and less product present क्योंकि आपका denominator बड़ा है और numerator is small and the equilibrium is more towards the left hand side. Okay, as you have a small value of Kc or a Kp, it means that the equilibrium is more towards the left hand side. सही आ रही है ना value? Equilibrium is more towards the left hand side. Suggest and explain why it's more difficult to determine the Kc for this equilibrium at room temperature. बताइए जनाब. एक बहुत अच्छा सा रीजन है इसे ये दिस इज द इक्वेशन. ठीक है. एंड दे आस्किंग कि भाई इसकी हम Kc वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं 120 डिग्री सेल्सियस पे एंड द Kc वैल्यू आपने निकाल दी 0.035 समथिंग. दे आस्किंग व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द Kc of this equation at room temperature. We can only find it out at high temperature. Guess करें. होगा स्लो होगा. हाँ बोलो क्या. Iodine is in a solid form. That's true. ठीक है. Clear? So yes, at room temperature the iodine is in a solid form. तो हमारी Kc expression ही valid नहीं होगी इसके ऊपर. ठीक है. So that's why. तो इसका आंसर क्या लिखोगे? इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन है तो आप लिखेंगे at room temperature iodine is in solid form. ठीक है. I don't know why they asked it for 2 marks. It should be 1 mark, 1-liner question. Explain how the enthalpy change. नहीं तो हमारे काम का नहीं है. This is about the enthalpy changes, bond energy, and yes, they mix it with enthalpy change.
Okay. Now I'm moving towards the next part of it. Or yes, we did a very like a small bit of practice. अभी हम obviously बाद में ज़्यादा करेंगे. The first part we done when find Kc and Kp when equilibrium composition is given. ठीक है? And the first part we done with this one. The B part of calculation, find equilibrium composition. Now we have to find out the moles of at equilibrium for reactant and product, which is called the equilibrium composition, if Kc and Kp or Kc or Kp is given. Okay, now we are provided with a Kc or a Kp value, and we need to find out the equilibrium concentration or equilibrium composition. ठीक है, डन. सो यस, ये बात बताइए कि पार्ट ए हो जाएगा ना कि इक्विलिब्रियम कंपोजिशन गिवन है, केसी की एक्सप्रेशन लिखें, प्लग इन द वैल्यूज एंड गेट द केसी केपी वैल्यू. डन बेटा, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट. Okay, there are two questions. There are many questions about the same format. हम इधर आते हैं. Let's start with this one. देखिए जनाब, you are provided with an equation, carbon dioxide in a gas form plus hydrogen in a gas form forming carbon monoxide and water, and the Kc value is given. ठीक है? D part 1 पढ़ रहे हैं. Explain with reason. ठीक है. It has been suggested that on a large scale the reaction could be helpful to the environment. Explain with the reasoning why this would be. वो कह रहा है कि large scale पे this reaction is helpful for the environment. Carbon dioxide is getting converted into less harmful product. वैसे तो ज्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट में यूज हो रहा है, किसमें यूज हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड में. बट दे आर यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड टू कन्वर्ट इट इनटू एन अल्कोहल. फर्स्ट लाइन पढ़िए, ठीक है ना? हाँ, एक अगर ये फर्स्ट लाइन स्टेटमेंट नहीं होता और any this reaction is converting carbon dioxide into carbon monoxide, it even more harmful for the atmosphere. Because carbon monoxide is poisonous, carbon dioxide is not poisonous. ठीक है, clear? So सही है, converting carbon dioxide to carbon monoxide and ultimately into a methanol. So carbon dioxide sequester हो रहा है, यानी atmosphere से remove हो रहा है. What is the value of Kc? Can you please write down the value of Kc? It's 1.44 at 1200 Kelvin. Whenever they give you the Kc value, they always give you with temperature. चलें आगे चलते हैं. It says a mixture containing इतने moles of carbon monoxide, carbon dioxide, इतने moles of hydrogen and carbon monoxide. देखिए, these are the initial moles given. Read that question again. A mixture containing 0.5 moles of carbon dioxide, 0.5 moles of hydrogen, 0.2 moles of water, and carbon monoxide was placed in a 1 dm³ flask. That's the volume given. Okay? And allowed to reach at equilibrium. देखिए, before this statement, यानी allowed to reach at equilibrium से पहले जो भी मोल्स गिवन होते हैं वो हमेशा इनिशियल मोल्स गिवन होते हैं. ठीक है? अच्छा, इनिशियली इट इज पॉसिबल कि वो रिएक्टेंट के साथ कुछ प्रोडक्ट भी मिक्स करें, एंड नॉर्मली रिवर्सिबल रिएक्शन हम इसी तरह परफॉर्म करते हैं. हम ज्यादा अमाउंट रिएक्टेंट का लेते हैं, कुछ अमाउंट प्रोडक्ट भी ऐड कर देते हैं ताकि जल्दी से इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए. व्हेन इक्विलिब्रियम अटेन अर्ली तो हम उसे डिस्टर्ब करके अपनी प्रोडक्ट ज्यादा हासिल कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर? सो दे से that they are mixing some reactant and product, and these are the initial moles given. Clear? Now अब हम एक स्टेटमेंट यहां देंगे. हम स्टेटमेंट ये देंगे, let x be the moles of product form.
एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, हमने अज्यूम ये किया कि लेट एक्स बी द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम। ये कॉन्सेप्ट एक दफा अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा बेटा, एक दफा समझ लेंगे तो आपको आसान हो जाए। तो अब हम इसी इक्वेशन के नीचे मैं लिखूंगा एट इक्विलिब्रियम। क्लियर? इक्विलिब्रियम पे अब देखें, अगर x के और मोल्स बने हैं तो इन दोनों में x मोल्स ऐड हो जाएंगे। वी शुड ऐड x मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड एंड वी शुड सब्ट्रैक्ट x मोल्स फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड। यानी रिएक्टेंट में से x कम हो जाएगा और प्रोडक्ट में फॉर्म। हाँ, इफ इट वुड बी 2 हियर तो मैं यहां पे 2x माइनस करता। अगर किसी इक्वेशन में 2 होता तो मैं 2x माइनस करता, क्योंकि मोलर रेशो के अकॉर्डिंगली 1:2। क्लियर? सो एट इक्विलिब्रियम ये हो जाएगा 0.5 0 माइनस x, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन अगेन 0.50 माइनस x, दिस इज 0.20 प्लस x, प्रोडक्ट में x ऐड होगा और रिएक्टेंट में से इट गेटिंग सब्ट्रैक्टेड प्लस। These are the moles of reactant and product at equilibrium. Now write down the Kc expression. Kc is equals to concentration of carbon monoxide into concentration of H2O divided by concentration of carbon dioxide into concentration of hydrogen. The value of Kc is 1.44, which is equals to carbon monoxide 0.20 plus X into 0.20 plus X divided by 0.50 minus X into 0.50 minus X। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इसको डिवाइडेड बाय 1 करेंगे। वाई? हम इन सारी वैल्यूज को 0.20 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1, 0.20 0.50 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 करेंगे। वाई वी डिवाइडेड बाय 1? बिकॉज द वॉल्यूम इज 1। दीज आर द मोल्स एट इक्विलिब्रियम। देखिए, एनकेसी एक्सप्रेशन में हमें क्या लिखना है? कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है। तो नॉर्मली द वॉल्यूम गेट कैंसिल्ड आउट। तो अगर वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो हम लिख के कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इफ इट्स नॉट गेटिंग कैंसिल आउट तो हमेशा गिवन होगा 1 टीएम क्यूब 2 डीएम क्यूब। यहाँ तो कैंसिल आउट हो रहा है। क्लियर? ये बात याद रखिएगा, केसी एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन आती है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन को जो है वो हम हमेशा मोल्स को डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करते हैं। क्लियर? लेकिन मैं यहां पर नहीं लगा रहा। ओके, क्या जहन में आ रहा है? इज इट सीम्स लाइक कि क्वाड्रेटिक अप्लाई करनी पड़ेगी, ऐसा ही है ना? लेकिन नहीं होगी। हमेशा याद रखिएगा, कैन आई से दैट इट बिकम 0.20 प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.50 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.44। कैन आई से दैट इट इज 0.20 प्लस एक्स divided by 0.50 minus x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1.44। ठीक है, पहली कैलकुलेशन है इसलिए कंप्लीट सॉल्व कर रहा हूं। 0.20 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 0.50 माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1.44। सो ये हो जाएगा 0.20 प्लस एक्स 0.50 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.2। ऑल्दो इट इज प्लस माइनस 1.2, बट ये वो मैथ्स वाला नहीं है तो हम प्लस 1.2 ही लेंगे। ठीक है, क्लियर? अब ये हो जाएगा 0.20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1.2 टाइम्स ऑफ 0.50 माइनस, कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स नाउ? देखो, ये कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है क्योंकि मैंने बहुत स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है, जस्ट बिकॉज कि आपको ये पहली कैलकुलेशन समझ में आ रहा है। इट कैन नेवर बी क्वाड्रेटिक, कभी भी नहीं हो सकता। केसी की के टॉपिक में क्वाड्रेटिक तक बात नहीं जा सकती। अगर आप सॉल्व करते हुए जा रहे हैं
एंड यू रियलाइज कि आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक पे पहुंच गई है, तो इट मींस यू डिड इट रॉन्ग। हमेशा होल स्क्वायर बनेगा, हमेशा अंडर रूट आए। मुश्किल है तो निकालें एक्स की वैल्यू। वैसे तो मुझे याद है 0 पॉइंट क्या है ये 0.5। 0.18 ठीक है। क्या 0.18 इज द आंसर नाउ? नो, मोल्स आप लिखेंगे मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू कितने थे जनाब? 0.50 माइनस 0.18। अब आप आंसर बताएं कितना आ रहा है? 0.32 एंड द सेम। और यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल्स टू 0.20 प्लस 0.18 विच इज इक्वल टू 0.38। ठीक है, क्लियर? और इन दोनों के मोल्स बराबर होंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, एंड दिस इज द मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, क्लियर? एज आई सेड कि दिस पेज लुक कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में आपको सारी बातें समझाई है। सिंपल वे, यू आर प्रोवाइडेड विद द केसी वैल्यू। ठीक है, आपने करना क्या है, और एक इनिशियल मोल्स गिवन होंगे। आपने बोला है लेट एक्स बी द मोल्स फॉर्म एट इक्विलिब्रियम। प्रोडक्ट में एक्स ऐड कर देना, रिएक्टेंट में से माइनस कर देना। इफ कहीं पे अगर दो मोल्स रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के होंगे, 2x प्लस या 2x माइनस होगा। ठीक है, क्लियर? अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी इफ यू ट्राई टू सॉल्व दिस वन। ओके, वो भी कर सकते हैं, अभी उस पर आते हैं। लेट्स सी if I have another one. This one. Okay. Equation is given. Initial moles are given. X assume कीजिए. You need the Kc value for this one, beta. The Kc value is given again. 140 at 500. And they're asking about 650. 650 पे the Kc value is 59. So yes, the Kc is 59. And there's no unit of Kc as well. ऐसे ही है ना? अब जल्दी से मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, आयोडीन एंड HI दीजिए एट इक्विलिब्रियम। ओके, एट इक्विलिब्रियम माइनस एक्स प्लस 2x। गुड। सो दिस इज 0.02 minus x, 0.02 minus x, and this is 2x. So Kc is equals to, as the volume is 1 dm3, no need to write 1. So it is 2x square divided by 0.2 minus x into 0.2 minus x. Agreed? So can I say that 59, which is the Kc value, is equals to 2x divided, sorry, 0.02. Thank you, beta. Okay. 2x divided by 0.02 minus x ka whole square. And then 2x divided by 0.02 minus x is equal to under root 59 is 7.7. Find out the value of x.
इसको 7.68 ही लेंगे बेटा, अदरवाइज हमारी वैल्यू बहुत डिफर कर जाएगी। √59 इज 7.68 है मेरे पास, देखो दोबारा, है ना? तो टिक इट 68, क्लियर? सो यस, 2x आपके पास इज इक्वल्स टू 7.68, 0.02 माइनस x, 0.0159, 0.016 ले लेंगे हम इसे, ठीक है? क्लियर? सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे बेटा 0.02 माइनस 0.016, विच इज 0.004, ठीक है? एंड द सेम वुड बी द मोल्स ऑफ आयोडीन 0.004, सेम हाइड्रोजन आयोडाइड इज 0.2x हो जाएगा, सो 0.032, ठीक है? So that's how you calculate the moles present at equilibrium if the value of Kc or a Kp is given. ठीक है? You can take the screenshot online वाले. And as I'm introducing this topic right now, so obviously calculation की और practice होगी बाद में. Let me just show you something. Okay. Now question number 4. 0.2 moles of hydrogen and 0.15 moles of iodine. This is the reversible sign which is missing here. आयोडीन गैस है, ठीक है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर फाउंड टू कंटेन इतने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, इक्विलिब्रियम क्लियर। नाउ देखिए जनाब, H2 प्लस I2 फॉर्मिंग 2 हाइड्रोजन आयोडाइड, दिस इज द इक्वेशन। इनिशियली it says 0.2 moles of hydrogen and 0.15 moles of iodine. Gas is heated at, अच्छा, didn't they say anything about hydrogen iodide before writing until equilibrium? प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ ना, इसका मतलब इनिशियली द प्रोडक्ट इज 0। जब तक कोई ये स्टेटमेंट बोलता है ना कि इज अलाउड टू मिक्स एट दैट टेम्परेचर until the equilibrium is established, उससे पहले जितना भी डाटा गिवन होता है दैट्स बिफोर इनिशियल मोल्स आर गिवन। अगर प्रोडक्ट लिखा है तो प्रोडक्ट के भी प्रेजेंट है। फिर उसने बोला until the equilibrium is established, now the number of moles at equilibrium are given. So at equilibrium क्या given है जनाब हमें? At equilibrium it is found to that contain इतने moles of hydrogen iodide, 0.26 moles of hydrogen iodide. Now iodine and hydrogen iodide is 1:2, यानी 0.26 moles of हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने के लिए, ठीक है, दिस इज 1:2। सो अगर हाइड्रोजन आयोडाइड 0.26 मोल्स बना है तो ये कितना यूज्ड अप हुआ होगा? 0.13, है ना? हाफ यूज्ड अप हुआ होगा बिकॉज 1:2 है। So it means that when 0.13 moles of iodines are getting used up, it converting into double moles, which is 0.26 moles of hydrogen iodide. So 0.15 में से मैं कितना माइनस कर दूं? 0.13, तो एट इक्विलिब्रियम बच जाएगा, कितना बचेगा? 0.02। These are the moles of iodine present at equilibrium. In a similar way, 0.2 में से भी मैं 0.13 माइनस कर दूंगा तो 0.07 बचेगा। These are the moles at equilibrium. ठीक है, क्लियर? ये वाली बात क्लियर हुई? 2x is 0.26, तो x should be 0.13, है ना? रिएक्टेंट में से 0.13 माइनस हो जाएगा, तो हमने दोनों रिएक्टेंट में से 0.13 माइनस कर दिया। क्लियर? नाउ इक्विलिब्रियम के लिए हम प्रोडक्ट यानी 0.26 का स्क्वायर, व्हिच इज दिस वन,
divided by 0.02, 0.07. Yes, the right answer is C. Easy. अभी थोड़ी और प्रैक्टिस होगी. इफ यू फाइंड इट बिट डिफिकल्ट, कोई मसला नहीं है, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 15. वो जो सारी कैलकुलेशन अभी हमने P2 के लिए करी है, दे आस्किंग द सेम इन P1. नाउ द Kc वैल्यू इज गिवन बेटा, व्हिच इज 4. ठीक है, अब जल्दी से बताओ कि 1 मोल ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड. कैन यू आइडेंटिफाई इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड? दोनों रिएक्टेंट है. सही है, तो प्रोडक्ट इज 0. So this is 1, this is 1, this is 0, and this is at equilibrium. Let's suppose this is plus x, plus x, this is minus x, minus x. 0 minus x, 0 minus x. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 4. है ना? एट इक्विलिब्रियम में हो जाएगा ना 1 प्लस एक्स, दिस इज 1 प्लस एक्स, दिस इज 0 माइनस एक्स, 0 माइनस एक्स, यानी एक्स स्क्वायर बनेगा तो माइनस कटिंग हो जाएगा. तो दिस इज, तो कैन आई से दैट एक्स ओवर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2. ठीक है, एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स. एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 2x. ऐसे ही है, एक्स आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा? हम्म, माइनस क्यों हो रहा है? 2 अपॉन 2/3 आ रहा है. हाँ, 2/3 आएगा. क्या आ रहा है? क्या हुआ? कहाँ फंस गए? x-2 क्यों आ रहा है? कुछ गड़बड़ करी है हमने. 1 मोल ऑफ ईट इक्विलिब्रियम 1 1. हाँ, तो हमने गलती की है ना बेटा. पिटाई हो जाएगी तुम लोगों की. प्लस एक्स, ये माइनस एक्स होगा. आई एम सो सॉरी. अब क्या आएगा? 2 माइनस 2x. x2/. आई रिमेम्बर द आंसर, दैट्स व्हाई मैंने फाइनल आंसर. ठीक है, ठीक, मुझे भी लग रहा है. मैं दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग ऑन दिस क्वेश्चन. ठीक है, हो जाता है क्लास के एंड में, ऐसा होता है. सो ठीक है जी, आप यू नो द मेथड कैसे कैलकुलेट करना है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है. इफ यू हैव अ गुड प्रैक्टिस, ऑब्वियसली डूइंग इट फर्स्ट टाइम, इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो अगर अच्छी सी प्रैक्टिस होगी तो यू कैन इजिली डू इट. वन मोर लास्ट वन एंड देन wind it up. Okay, question number 19. Nitrogen dioxide equilibrium when 4 moles. Okay, I'm going to write down the equation यहाँ खुली जगह में. NO2 forming 2NO plus O2. टेक्निकली तो ये होना चाहिए कि अब आप लोग बोलें सर आप छोड़ें, हम करते हैं आप इसको. 4 moles of nitrogen for nitrogen dioxide means this is 4 initially, this is 0, this is 0. ठीक है. हीटेड टेम्परेचर इक्विलिब्रियम इतने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन आपके पास एट इक्विलिब्रियम है 0.8.
how much NO should be there? Double of oxygen, है ना? 1:2 है, so it should be 1.6. What is the molar ratio of oxygen and NO2? So इसमें से कितना माइनस हो जाएगा? 1.6. जितना ऑक्सीजन बना है उसका डबल NO2 यूज्ड अप होगा, बिकॉज दिस इज 1:2. So 4 minus 1.6 कितना हो जाता है जनाब? 2 point. So yes, the equilibrium, the right answer is ये वाला है 1.6 का स्क्वायर 0.8 डिवाइड बाय 2.4 का स्क्वायर. यहाँ इन्होंने 1.6 का स्क्वायर नहीं किया. दैट्स द ओनली एरर. ठीक है, क्लियर? So yes, these are the moles at equilibrium, which is 2.4 for this one. So this is 2.4. इसका तो स्क्वायर होगा, 1.6 का भी स्क्वायर होगा, and 0.8 ऐसे रहेगा. ठीक है. So जनाब, we keeping it till here. Revise it thoroughly so we can do more calculation of it.